गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त इन द जर्नी ऑफ नीट, मिस बॉटनिस्ट, यस स्वाति बत्रा। क्या कर रहे हैं, कैसे हैं आप लोग? हेलो डॉक्टर प्रियांश, हेलो। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? बताइए, ऑडिबल एंड विजिबल? हाँ जी, हेलो आयुष। ऑलराइट, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। हेलो अर्पिता। पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन मीन्स पोलन मेल पार्ट और फीमेल पार्ट की आपस में बातचीत, इंटरैक्शन। सो इंटरैक्ट कैसे करते हैं, विच केमिकल्स आर इन्वॉल्व, विच प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व, ये केमिकल्स कहाँ पर हैं, ये सारी बात हम आज करने वाले हैं। ऑल गुड आयुष? सुपर। हेलो स्वागता, आई एम ऑल्सो डूइंग गुड। ऑल राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। तो फटाफट से क्विकली रिव्यू करते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स में, हाय गुड आफ्टरनून प्रेरणा, कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या किया है। राइट, चलिए, मैं कौन हूं आपको पता है, स्वाति बत्रा, डन एमएससी इन बॉटनी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। राइट, चलिए, गुड आफ्टरनून पूनम सिंह, ऑल माय रेगुलर स्टूडेंट्स, वेरी गुड। ओके, सो व्हाट ऑल वी डिड, ध्यान से देखिए, वी हैव डन पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। याद है वर्ल्ड्स पढ़े थे पिछली क्लास में। आई टोल्ड यू अबाउट पॉलिनेशन एंड देन आई ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट, राइट, आई टोल्ड यू गाइटोनोगैमी जो है दैट इज जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन, राइट, ये भी बताया था आपको। Then in the previous class I already told you about pollinating agencies। तो क्विक रिकैप दे रही हूँ कि आफ्टर द लेक्चर, अगर आपने प्रीवियस 3-4 लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं तो क्विकली वॉच द रिकॉर्डिंग्स, बट नॉट अभी, आफ्टर दिस लेक्चर, राइट। बट आई प्रॉमिस यू, you won't find difficulty in understanding this lecture even if you haven't attended the previous lectures। हाँ जी, गुड आफ्टरनून उषा, हाय मयूरी, हेलो देवेश। ओके, चलिए, सो पॉलिनेटिंग एजेंसीज ऑल्सो वी हैव कवर्ड, बट यस, डू यू रिमेंबर कि हमने कहाँ पे लीव किया था पिछली क्लास में? डू यू रिमेंबर एनीवन? बताइए, जल्दी से बताइए मुझे। यस, वी हैव टू कंप्लीट contrivances of cross pollination, right? We have to do contrivances of cross pollination। contrivances का मतलब क्या है? method, methods to promote cross pollination, right? Just a minute, yes, wait, so methods to promote the क्रॉस पॉलिनेशन। जस्ट अ मिनट बच्चा, एक मिनट वेट करिए। हाँ जी, कॉन्ट्रीवेंसेस कंप्लीट करना, बिल्कुल आयुष, वही तो करवा रही हूँ, कॉन्ट्रीवेंसेस से तो कंप्लीट करवा रही हूँ। वेट अ सेकंड, सो तब तक ये एरर रेक्टिफाई हो रहा है, बात करते हैं हम कॉन्ट्रीवेंसेस मेथड्स प्रमोट क्या होता है। ऐसे मेथड्स या आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहे हैं। मतलब प्लांट खुद क्या चाहता है? प्लांट चाहता है कि मुझे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं करना, राइट। प्लांट क्या चाहता है? भाई मुझे डिप्रेशन नहीं, मुझे नए नए कैरेक्टर्स चाहिए, न्यू वेरिएशंस चाहिए, राइट। तो प्लांट क्या चाहेगा? ऐसे मेथड्स जिससे क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट हो, राइट। क्लियर बच्चा लोग? जिससे क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट हो, राइट। ओके, चलिए, ऑल राइट। ओके, सो वी हैव टू डू व्हाट? हमें क्या करना था?
हमें करना है कॉन्ट्रीवेंसेस, और हमें कॉन्ट्रीवेंसेस में मैं फिर रिकैप दे रही हूँ कॉन्ट्रीवेंसेस क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रीवेंस में फर्स्ट कॉन्ट्रीवेंस क्या था हमारा? डाइकोगैमी, राइट। डाइकोगैमी का मतलब क्या बताया था? देयर इज लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, तालमेल नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं है किसके बीच में? मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। मीन्स अभी पहले पॉलन मैच्योर हो गया, राइट, एट द सेम टाइम द स्टिग्मा इज नॉट रिसेप्टिव, और vice versa. When the stigma is receptive, the pollen grains, they have not dispersed. That means, what does the plant wants to do? The plants want to do cross pollination, right? So there is different time of maturity, and I already told you about protoandry and protogyny in the previous lecture. In this lecture we have to start with unisexuality. देखो, हम लोगों को यूनिसेक्सुअलिटी या डाइक्लाइनी पढ़ना है। ऑब्वियसली अगर एक फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो पॉलिनेटिंग एजेंसी तो चाहिए, तो चांसेस आर मोर। भाई उस केस में ऑटोगैमी तो हो नहीं सकता, उस केस में तो क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। बट कैसा? गाइटोनोगैमी होगा, जेनोगैमी होगा। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, ध्यान से देखिए। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स can be present in two conditions. The unisexual flowers, they can be present in two conditions. कौन सी दो conditions हैं? Look at it very carefully. One, monoecious plant, and the other one is dioecious plant. Firstly, this concept has to be clarified that monoecious dioecious terms are not related to bisexual flowers. They are related to unisexual flowers, right? Now, what about monoecious? Suppose this is a monoecious plant and it has got various flowers, right? Now in this, some of the flowers can be male, but some of the flowers can be female. That means in monoecious plant there is no bisexual flower. So what is the definition of monoecious? Monoecious means the male and the female flowers, they are present on the same plant. It does not mean, मोनेशियस का ये डेफिनेशन नहीं है कि व्हेन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। जब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स सेम प्लांट पे होंगे, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स तो सेम प्लांट पे ही होंगे, राइट? तो वो तो प्लांट क्या कहलाएगा? बाइसेक्सुअल, राइट? लाइक सपोज वी हैव चाइना रोज। चाइना रोज में द मेल एंड द फीमेल फ्लावर, इट इज प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, तो ये फ्लावर तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया, राइट? तो यहाँ पे हम टर्मिनोलॉजीज के चाइना रोज के प्लांट के लिए वी कैन नॉट यूज द टर्मिनोलॉजी मोनोएशियस। चाइना रोज तो कैसा फ्लावर हुआ हमारा? बाइसेक्सुअल, क्योंकि ये देखिए ये पोलन ग्रेन्स है और इसके अंदर अगर मैं इसे स्प्लिट करती हूँ, जो मैं करूंगी अभी, आपको स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, आप देखिए ट्राई, ये पेंटाफिड स्टिग्मा 1 2 3 4 5 दिख रहा है आपको? पेंटाफिड स्टिग्मा, तो दैट मीन्स इट्स अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। सो वी कैन नॉट यूज द टर्म मोनोएशियस हियर। मोनोएशियस मतलब है एक पूरा प्लांट है और उस प्लांट में आधे फ्लावर्स मेल हैं और आधे फ्लावर्स फीमेल है। नाउ नेक्स्ट, डायोशियस इज वेरी सिंपल, वेरी इजी। वी हैव टू डिफरेंट प्लांट्स। एक प्लांट पे सारे फ्लावर्स मेल हो जाएंगे और दूसरे प्लांट पे, ऑन द अदर प्लांट, सारे फ्लावर्स आपके फीमेल हो जाएंगे, राइट? So what about dioecious? Look here. Now all these flowers, they are female flowers, and on the other plant all the flowers are male flowers. That means the definition of dioecious is when the male and the female flowers
are present on two different plants. तो ये तो बहुत आसान हो गया भाई. मोनेशियस में मेल एंड फीमेल फ्लावर्स सेम प्लांट पे. दैट मीन्स अगर प्लांट मोनोएशियस है तो वो ऑटोगैमी तो नहीं कर सकता, क्योंकि ऑटोगैमी तो तभी होगा जब फ्लावर बाइसेक्सुअल होता, राइट. लेकिन क्या गाइटोनोगैमी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि नेबर्स में तो शादी हो सकती है भाई, ऐसे तो नहीं. ऐसे होगी, मेल मेल में तो शादी नहीं कराएंगे हम यहाँ पे, ठीक है. तो नेबर्स में तो शादी हो सकती है, राइट. तो यहाँ पे, यहाँ से पोलन ग्रेन्स यहाँ तो जा सकते हैं. दैट मीन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट if a plant is monoecious, if the plant is monoecious, it will prevent autogamy but not gaetonogamy. तो इस प्लांट में ऑटोगैमी तो नहीं होगा, लेकिन गाइटोनोगैमी हो सकता है. बट इन डायोशियस नेबर नेबर में शादी तो नहीं हो सकती है, टू डिफरेंट प्लांट्स में हो सकती है, राइट. दैट मीन्स यहाँ पे डायोशियस में तो सिर्फ जेनोगैमी हो सकती है. दैट मीन्स डायोशियस प्लांट है, सो इन दिस केस इट इज गोइंग टू प्रिवेंट ऑटोगैमी एज वेल एज गाइटोनोगैमी, क्योंकि यहाँ पे तो नेबर्स में भी, पड़ोसियों में भी शादी नहीं हो सकती, राइट बच्चा. ठीक है, दिवेश, पूनम, फाजिया, आयुष, उषा, मयूरी, क्लियर है बेटा. दैट मीन्स नाउ द क्वेश्चन इन द नीट एग्जामिनेशन won't be very simple. They will ask you an example based question. How? They will ask you कि मोनेशियस प्लांट के एग्जाम्पल, डायोशियस प्लांट के एग्जाम्पल लाइक कैस्टर, कोकोनट, कुकुरबिट्स, मेज. तो पूछेगा कि कैस्टर के अंदर क्या प्रिवेंट हो रहा है? ऑटो, लेकिन गाइटोनो प्रिवेंट नहीं हो सकता. और यहाँ पे पपाया, डेट पाम, मलबेरी, कैनाबिस, वैलिसनेरिया, डायोशियस प्लांट में ऑटोगैमी भी नहीं हो सकता, गाइटोनो भी नहीं हो सकता. तो क्या हो सकता है? सिर्फ xenogamy. These kind of questions can be asked example based, right बच्चा? Yes, वो पॉसिबल है. आयुष, उसके लिए अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, सेम ब्रांच, डिफरेंट ब्रांच, ऑटोइशियस, पैराइकस. सो यस, इट कैन बी प्रेजेंट आयुष, राइट. चलिए आगे बढ़े. कैन वी गो फर्दर? ऑल राइट. नाउ हर्कोगैमी, like if I say this is a male flower, this is a female flower, but मेल और फीमेल फ्लावर के बीच में कोई फिजिकल बैरियर आ गया, या फिर फिजिकल बैरियर अगर नहीं आपको समझ में आ रही है बात, ध्यान से सुनिए. मेल और फीमेल दे आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशंस. सपोज मेल इतना बड़ा है, यहाँ पे फीमेल ऐसे है. when the male and female they are not facing each other or they are placed at different positions, right? Suppose it's a bisexual flower, but the male and female are placed at different positions, so there are chances of cross pollination, right? So hercogamy, like seen in calotropis, there is a physical barrier or the anther and stigma, they are placed in such positions like this. Anther is facing like this, stigma is facing like this. That means there are chances of, more chances of cross pollination, right? So physical barrier between androecium and gynoecium, or the anther and the stigma are placed at different positions, so that there are chances of more cross pollination, like seen in calotropis, commonly known as milkweed. Milkweed, right बच्चा लोग? Let's go further. Okay, self incompatibility. प्लांट अपने ही पोलन को जर्मिनेट करने नहीं दे रहा, right? Look here, suppose the pollen which is landing here, ये प्लांट का सेल्फ पोलन है, right?
एंड प्लांट के ऊपर ये लैंड कर रहा है फॉरेनर, फॉरेन पॉलन, राइट? सो फॉरेन पॉलन इज germinating and self pollen is not germinating. That means due to some genes, yes, there is involvement of some genes. Why? Because self incompatibility, it is a genetically controlled mechanism, right? So yes, there are certain genes responsible due to which the plant doesn't want to recognize its own pollen, because the plant does not want inbreeding depression. Plant wants the foreign pollen to germinate so that there are more variations, right बच्चा? Okay, yes, बिल्कुल रत्नादीप, बेस्ड ऑन एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो वही एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, राइट रत्ना दी? ऑल राइट, सो यस, वी हैव अ प्लांट कॉल्ड पैसिफ्लोरा। यस, पैसिफ्लोरा प्लांट अपने ही पॉलन को रिजेक्ट कर देता है एंड इट ट्राइज टू रिकॉग्नाइज द फॉरेन पॉलन। क्लियर बच्चा लोग? तो यहां पे वी आर फिनिश्ड विद द कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन एंड वी हैव ऑल्सो फिनिश्ड pollination and pollinating agencies. I think everybody is understanding, right? तो फटाफट एक लाइक्स का राउंड हो जाए, लाइक्स का राउंड जल्दी से बचा लो। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट इफ वी कम, yes, our topic for today, pollen pistil interaction. Yes, now what are the events? पहले तो pollen और pistil की आपस में बातचीत, interaction, right? तो interaction कैसे? Very good, फैजान, good. Okay, now all the events starting from the pollen grain deposition on the stigma, जब pollen grain stigma पे deposit कर रहा है, till the entry of pollen tube inside the ovule or inside the embryo sac. I hope you remember, I told you polygonum type of embryo sac. That was how many nucleates and how many cells? Can anybody tell me? Thank you so much Ayush. How many nucleates and how many cells? कितना nucleate कितने सेल था बच्चा बताओ? कितना nucleate कितना सेल था polygonum type? Yes. Who will answer first? I am consistently looking at the chat box. देखते हैं कौन आंसर करता है, फटाफट से बताओ। Yes. जल्दी से फटाफट से। Very good Ayush. 8 nucleate 7 cell. Good. Okay. So pollination हो गया, pollen grain का ट्रांसफर हो गया स्टिग्मा पे। अब all the events वहां से जो शुरुआत हो रही है, so all the events starting from the deposition of the pollen grain, ये जो pollen grain deposit कर रहा है स्टिग्मा पे, till the entry of pollen tube, यहां पे pollen tube बनेगी, so till the entry of pollen tube inside the ovule, ovule के अंदर या फिर ovule के अंदर क्या होता है, embryo sac, तो यहां पे ovule है, तो ovule के अंदर and ovule के अंदर it is embryo sac, right? So all the events starting from pollen deposition on the stigma till the entry of the pollen tube inside the ovule और ovule के अंदर क्या है, embryo sac, वहां तक जितने भी events होते हैं उन सबको collectively हम बोलते हैं pollen pistil interaction, right बच्चा लोग? क्लैरिटी है यहां तक, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। Now
क्या क्या होता है इन इवेंट्स में, एंड क्या सिर्फ पॉलिनेशन, ओनली पॉलिनेशन गारंटी करता है कि राइट टाइप ऑफ पोलन स्टिग्मा पे लैंड किया। भाई टोमेटो का पोलन ब्रिंजल पे लैंड कर सकता है, पोटैटो का पोलन कॉटन पे लैंड कर सकता है, राइट? ओके, सो yes, look at this beautiful slide, how the pollen grain is landing on the stigma. So how the beautiful pollen grain is landing on the stigma, bacha, right? Okay, so let's go further. Look at this beautiful slide. Yes, how beautifully it is explained that how the pollen grains are landing on the stigma, right? Okay, so we'll come to these animated slides also after covering this part. ये सारा polygonum type of embryo sac, we are going to come on this slide also, right? So first of all, pollination does not guarantee that the right type of pollen is landing on the stigma. It can be of the right type, means compatible भी हो सकता है. So yes, it can be compatible. Compatible is of the same species. ठीक है, सेम स्पीशीज का होगा तो बच्चा कंपैटिबल होगा. डिफरेंट स्पीशीज का होगा, पोटैटो कॉटन पे लैंड कर गया तो इनकम्पैटिबल होगा. बट इन स्पेशल केसेस, इन सम केसेस, कुछ केसेस में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी हो सकती है. मतलब प्लांट अपने ही पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट कर रहा है. सो यस, मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर सेम स्पीशीज का कंपैटिबल है, मतलब राइट टाइप ऑफ पॉलन है, एंड डिफरेंट स्पीशीज का इनकम्पैटिबल है, रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन है. बट देयर आर सर्टेन स्पेशल केसेस, इन सम केसेस सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब प्लांट अपने ही पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट कर रहा है, राइट? बट ये कुछ ही केसेस है, सम केसेस है. नाउ क्या होता है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स और केमिकल्स. किसके ऊपर? ऑन द सरफेस ऑफ पॉलन वॉल, ऑन द एक्साइन. एक्साइन के ऊपर, as you know, there are two layers in the wall of the pollen grain. Inner one is intine and the outer one is exine, right? So there are certain proteins or chemicals on the pollen wall, exine, and there is also presence of certain proteins or chemicals on the stigma. Yes, so suppose like this is the stigma, right? And the pollen grain is landing on the stigma, right? So this spiny one is the exine. So there is presence of certain proteins on the exine, right? And also there is presence of certain proteins on the stigma. And now these proteins are going to interact. ये जो प्रोटीन्स हैं ये आपस में बातचीत करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे. अगर आपस में बातचीत के बाद इनमें कंपैटिबिलिटी, उन्हें लगता है नहीं भाई ठीक है हम आपस में एक दूसरे से कंपैटिबल हैं, तो पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब बना सकता है. लेकिन अगर उन्हें लगता है आपस में बातचीत करके, अगर आपस में बातचीत करके उनको लगता है कि हम आपस में कंपैटिबल नहीं हैं, हमारे कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं, हम आपस में गेट अलोंग नहीं कर सकते, तो स्टिग्मा विल रिजेक्ट द पॉलन. या तो वो पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट करने ही नहीं देगी, या फिर वो पॉलन ग्रेन अगर पॉलन ट्यूब बना चुका होगा तो वो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को इनहिबिट कर देगी. मतलब पिस्टिल के पास, yes, stigma is obviously a part of pistil. So pistil can have two options to reject the pollen. Either it will inhibit its germination,
or it is going to inhibit the growth of the pollen tube in the style. Right, बच्चा लोग? Okay. So, yes, if I tell you, अगर compatible हैं, if favorable reaction is there, then the pollen grain will germinate and the pollen tube formation will be there. But in case if the pistil wants to reject, it can also reject. So there is a continuous dialogue. Dialogue बाजी चल रही है. Continuous dialogue between pollen and the pistil. तभी तो क्या नेम दिया? Pollen pistil interaction. Right? है ना? ठीक है? So there is a continuous dialogue. Continuous dialogue चल रहा है between pollen and the pistil. And this dialogue is mediated by, कौन करता है ये dialogue? Chemical, proteins, किसके? Pollen grain के and pistil के. Right? This dialogue is mediated by the chemical components of the pollen interacting with those of pistil. Pistil में chemicals, pollen grain में chemicals, आपस में बातचीत, continuous dialogue. वही continuous dialogue से mediate हो रही हैं चीजें. Right? Now suppose if, that means if a question is there, क्या pollen pistil interaction एक dynamic process है या static process है? तो what are you going to answer? Please answer in the chat box. Is pollen pistil interaction a static process or a dynamic process? Can you tell me बच्चा? बताइए कैसा process है? Yes, it is A. ये देखिए यहाँ पे it is A. I'll come back to that slide. Dynamic process. Dynamic मतलब a lot of events are involved. ठीक है, बहुत सारे events involved हैं. Static process नहीं है, dynamic process है. Right? Let's come back to those slides. Yes. देखिए ये pollen grain, ये pollen tube बन रही है, कुछ pollen grain की pollen tube नहीं बन रही है. So I told you it's a genetically controlled mechanism, right? ये S1, S2 है ना, ये genetically controlled mechanism है, right? बोलो क्लियर है? बोलो जल्दी लो. Please tell me. ठीक है नहीं? Genetically controlled mechanism है, and these, yes, you must be wondering what are these? These are the genes. Actually, if we talk about the real concept, there is one gene, S gene, which controls this self-incompatibility, but that S gene has got multiple alleles. S1, S2, S3, we are going to talk about this multiple allelism in genetics. हम लोग genetics में बात कर रहे हैं, बात करेंगे multiple allelism की. अभी we don't have to know about this. Abhi we just have to know that self-incompatibility, it's a genetically controlled mechanism, right? Okay, so crystal clear. Dr. Priyaj, Ayush, Masuda, very good. Then again a microscopic proof. देखो ये pollen tube germinate कर रही है, pollen tube है, ये pollen grain है, right? Okay, next. Now I told you, if the pistil wants to reject or accept करेगा, so pollen tube formation will be there. Reject करेगा, if it want to reject, तो या तो it will inhibit the germination. Germination को ही inhibit कर देगा. It is going to reject. How? It will prevent the germination. या फिर in case if the pollen grain has germinated to form the pollen tube, now the pistil is thinking of rejecting. So what the pistil is going to do, it is going to inhibit the growth of the pollen tube. अब वो pollen tube की growth को inhibit कर देगा, right? Crystal clear till here. All right. So what are the events that constitute? What are the events? ऐसे कौन से events हैं जो pollen pistil interaction को constitute करते हैं?
यस, अभी मैं आपको समझाने वाली हूं एक हैंड रिटन डायग्राम से कि क्या होने वाला है इवेंट्स के अंदर. व्हाट आर द इवेंट्स? सो यस, दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी, दिस इज स्टिग्मा, एंड स्टिग्मा के ऊपर लैंडिंग हो गई है पोलन ग्रेन की. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन. नाउ all the events starting from here till the entry of pollen tube inside the embryo sac, that is called pollen pistil interaction. So this layer, yes, it is intine, and the layer which is spiny type, it is showing a variety of designs. That layer is called exine, right? Okay, now you can see here, and I've already told you this, that this portion where the sporopollenin is absent, I told you in my second lecture that this is called germ pore. So germ pore, it is an area, it is a pore, aperture, as I told you earlier, where sporopollenin is absent. Right बच्चा लोग, clear है बेटा? यहाँ तक concept clear है. Now, as I told you in my previous lectures, almost about in over 60% of angiosperms, the pollen grains are dispersed at two-celled stage. Yes, in over 60% of angiosperms, the pollen grains are dispersed at two-celled stage. So we are going to talk about those 60% only because they are the majority. That means the bigger cell is known as VC. Who is going to tell me in the chat box what is VC? VC, which has an irregular nucleus, as I told you, and which cell floats freely in the cytoplasm of VC. That cell is called GC, जिसका ऐसे oval nucleus था. I told you VC is vegetative cell. Very good. GC is generative cell, जिसका ovoid spherical nucleus है. ठीक है, VC जो है वो बड़ा है और उसका irregular nucleus है. Very good, very good. Now what will happen? Pollen grain land कर गया किसके ऊपर? Pollen grain land कर गया किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर. राइट, अब पोलन ग्रेन क्या करेगा? अब पोलन ग्रेन क्या करेगा बताइए बच्चा लोग? अब पोलन ग्रेन नाउ इट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब. वेरी गुड जीसी, बहुत बढ़िया जीसी वीसी. नाउ पोलन ग्रेन विल एब्जॉर्ब व्हाट? द पोलन ग्रेन इज गोइंग टू एब्जॉर्ब द कैल्शियम. यस, the pollen grain is going to absorb, wait a second, it is going to absorb various chemicals. कौन से chemicals absorb करेगा? Look at this very very carefully. ध्यान से देखिए. Now the pollen grain will absorb calcium, boron and water from the stigmatic surface. The pollen grain is going to absorb calcium, boron and water from the stigmatic surface, and the protoplasm of the pollen grain swells. Protoplasm of the pollen grain swells and exerts pressure. What is protoplasm? Cytoplasm plus cell membrane
To avoid confusion, we have not drawn cell membrane here. So now the protoplasm swells and it exerts pressure on the cell wall. तो प्रेशर एक्सर्ट होगा दोनों लेयर्स के ऊपर, और दोनों लेयर्स कौन सी है आपकी, इंटाइन भी है, एक्साइन भी है. अब एक्साइन तो हार्ड है, वो स्पोरोपोलिन से बनी है, तो किसको फर्क पड़ेगा? हु विल बी अफेक्टेड? यस, this intine. So when the pressure is exerted, intine forms the pollen tube. ठीक है, इंटाइन बर्स्ट कर जाएगी और इंटाइन बनाएगी पोलन ट्यूब. देखिए, ये देखिए, इंटाइन इज गोइंग टू फॉर्म दी pollen tube, right? So pressure will be exerted and intine forms the pollen tube. But which cell helps intine to form the pollen tube? It is VC. So if it is asked, which cell is forming the pollen tube? VC. Which layer is forming the pollen tube? मतलब pollen tube कौन से layer की extension है? Intine. So yes, in the bracket I will write VC forms the pollen tube. So vegetative cell forms the pollen tube. But which layer is the extension of the pollen tube? It is intine. Now, when this is occurring simultaneously, I will again go back to the previous slide. Simultaneously, generative cell also divides by what? By unequal mitosis to form two male gametes. I repeat, simultaneously GC also divides by unequal mitosis to form two male gametes. Now here I am going to discuss a PYQ about the male gametes. Male gametes कैसे होते हैं? They are amoeboid. अमीबा जैसा शेप है या अमीबा जैसा प्रोटोप्लाज्म से थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, रेंग सकते हैं, बट एक्टिव मूवमेंट नहीं होती. दे आर नॉन मोटाइल एंड as there was unequal mitosis, so the male gametes, they are slightly unequal, right? Okay, so when this pollen tube is being formed, simultaneously the generative cell also divides to form two male gametes, and the male gametes, they are amoeboid. अमीबा जैसा चल सकते हैं, रेंग सकते हैं, स्लिप कर सकते हैं, but there is no active movement, so they are non-motile. The male gametes are non-motile and they are slightly unequal. एक थोड़ा बड़ा, एक थोड़ा छोटा, right? That means इस pollen tube के अंदर दो male gametes भी होंगे, right? तो इस pollen tube में क्या क्या होगा? इस pollen tube में एक तो होगा किसका न्यूक्लियस? किसका न्यूक्लियस होगा? इरेगुलर न्यूक्लियस. किसका? VC का, है ना? एक तो इरेगुलर न्यूक्लियस ऑफ VC, राइट? एंड टू मेल गैमीट्स. और भी बहुत कुछ होगा इस pollen tube में, बट दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस. हमारे सिलेबस में क्या है, हमें क्या जानना है? दैट pollen tube में दो मेल गैमीट्स हैं और इरेगुलर न्यूक्लियस है VC का, राइट? ठीक है, वी हैव टू टॉक. यस, okay, I want to clarify this. This is not asked that what is the position of VC. Sometimes in the books it is this nucleus of VC is also here, so that is also correct. So even if you want to make the nucleus of VC here, that is also fine, because we want to highlight our two male gametes. So this is the irregular nucleus of VC. That is also fine if you want to depict here. That is also perfectly okay,
right? So we have to concentrate on basically the two male gametes. Now, first of all, tell me that about this part, how the pollen grain is germinating. Is everything clear till here? Can I go further, बच्चा? यहाँ तक clear है? जल्दी बताओ. Okay, all right. So going further now. I'm going further now. First of all, let's quickly recall the steps. 1 minute में, and then let's go further. Pollen grain land किया, ठीक है? Pollen grain land किया, pollen tube बनी. Simultaneously GC ने divide करके 2 male gametes बना लिए, right? It's clear till here. Now this pollen tube is going to enter where? Where it is going to enter? It is going to enter the ovule, right? So we are going to make the structure of ovule. But before that, we have to discuss certain points about pollen tube. फिर हम लोग पढ़ेंगे ovule का structure, right? Ovule का structure भी हम लोग कर चुके हैं, but we are going to repeat once. Yes. So pollen tube, it was first observed in the plant Portulaca oleracea by which scientist? Amici. G.B. Amici, he reported the presence of pollen tube in the plant Portulaca, right? Okay. Now generally we have only one pollen tube, and that condition is called monosiphonous. अब आपको समझना पड़ेगा, what do you mean by siphonogamy? Siphonogamy means fertilization with the help of pollen tube. So there is fertilization with the help of pollen tube, that is called siphonogamy. Now when there is formation of one pollen tube, so mono means one and siphonous means pollen tube. So when there is fertilization with the help of one pollen tube, that is called monosiphonous. And when there are multiple pollen tubes, that condition is called पॉलीसाइफोनस. जब बहुत सारी पॉलन ट्यूब बन रही है तो पॉलीसाइफोनस है, जब एक पॉलन ट्यूब बन रही है तो मोनोसाइफोनस है. लाइक पॉलीसाइफोनस कंडीशन यू सी इन ल्यूफा, दैट इज तोरी. ल्यूफा, तो ल्यूफा, तोरी, बॉटल गॉड, सबका ही जीनस कॉमन रहता है, कुकुरबिटेसी फैमिली है. तो अब ये जान लीजिए, तोरी और बॉटल गॉड नहीं जानने की जरूरत है. यू अंडरस्टैंड ल्यूफा बिलोंग्स टू Cucurbitaceae family, Cucurbitaceae, right? And Malva, right? Malva belongs to Malvaceae. So Malvaceae is the family of China rose. So yes, polysiphonous condition, it is seen in Lupha and Malva. मतलब Cucurbitaceae family and Malvaceae family. Why we are not reading the examples of monosiphonous? क्योंकि monosiphonous is very common. So generally in all the plants, monosiphonous condition is there. So we have to read the exceptions, that is polysiphonous, which is seen in Lupha and Malva, right? Okay. Sometimes you also see branched pollen tube in the family Amentiferae. Amentiferae family के अंदर as you can see, Amentiferae में ब्रांच्ड पॉलन ट्यूब भी दिखती है, राइट? Amentiferae में कैसा नजर आता है? ब्रांच्ड पॉलन ट्यूब. जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग दिस. एंड द लॉन्गेस्ट पॉलन ट्यूब इन द एंटायर प्लांट किंगडम, in the entire plant kingdom, the longest pollen tube is seen in Zea maize, Bhutta maize. Surprisingly, Bhutta, Zea maize, it has the longest style. आप भुट्टे को कवर करते हो, भुट्टा गर्म होता है, गर्म होता है Zea maize, वो ग्रीन ग्रीन जैसे बड़े बड़े पत्ते जैसे, that is the style. It is none other than the style जो भुट्टे में आप कवर करने के लिए यूज करते हो. So Zea maize is having the longest pollen tube and the longest style in the plant kingdom,
राइट बच्चा, ओके चले आगे, ऑल राइट ठीक है। तो काफी हद तक आपको काफी अच्छे से पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन, पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन समझ में आ गया टू फॉर्म दी पॉलन ट्यूब, राइट। क्लियर है, क्लियर है आप लोगों को सब कुछ, ओके। ये एनसीईआरटी की लाइन जो पीवाईक्यू के अंदर इट हैज बीन आस्क्ड, PYQ में it has been asked, line of NCERT, the entire cytoplasm of pollen grain is confined to the tip of the pollen tube. That means when the pollen tube is formed, the entire cytoplasm due to gravity, the entire cytoplasm, the entire things are going to fall on the tip of the pollen tube, right? So okay, eventually yes, the scientists have divided certain zones in the pollen tube for the purpose of studying, but eventually all the things are lying on the tip of the pollen tube due to gravity, right? Is that clear? Okay, let's go further. Now, what about callose plugs? Now look here, suppose this is our pollen tube, and suppose the pollen tube gets injured. So who is going to heal the injury? So wherever the pollen tube gets injured, right? So whenever the pollen tube gets damaged, it gets damaged, the damaged area, the injured area is healed by, it is healed and sealed, it is sealed by callose plugs. So the injured area, it is sealed by callose plugs. Injured area ko suppose, look here, we have the two male gametes here, right? These are the two male gametes, and suppose this area is getting injured, this area. So this area will be, it will be sealed by callose plugs so that there is no backward flow of the male gametes, ताकि male gametes का backward flow नहीं हो, plus पॉलन ट्यूब का जो इंजर्ड एरिया है उसको भी हम लोग सील कर दें, राइट। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ callose plugs, right? Okay, now we have to again, where were we? Pollen grain has germinated to form the pollen tube. Now the pollen tube is going to enter where? The ovule, because the entire event is called pollen pistil interaction, right बच्चा लोग? मजा आ रहा है तो फटाफट यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मजा आ रहा है, इतनी ब्यूटीफुल स्लाइड्स यार, इतना ब्यूटीफुल आपको एक्सप्लेनेशन दिया है ना कि मजा आया। ऐसा लग ही नहीं ना आपके ऑनलाइन में हम मुझसे पढ़ रहे हैं, है ना? इतना ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन दिया आपको। फटाफट लाइक दबा दो यार जल्दी से। अपनी तारीफ मैं खुद ही कर रही हूँ, आप लोग तो कर नहीं रहे हो। ठीक है, तो यहां पे नाउ वी हैव टू मूव टूवर्ड्स entry of the pollen tube inside the ovule. Now look here, I am going to draw with the help of illustration. देखिए इधर is no green is not visible to you ना, I should take yellow color. Okay, this is the diagram for the pollen pistil interaction. We want to show that how the pollen tube is going to enter the ovule, right? So the pollen grain has germinated to form the pollen tube. VC is making the pollen tube, that's why VC is called tube cell. But which layer is the extension of the pollen tube? It is intine, right?
सो इंटाइन बना लेगा pollen tube and now the pollen tube is going to enter the embryo sac or the ovule, right? ऐसा नहीं है कि एग्जाम में ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक में चॉइस आ जाएगा, लेकिन अगर चॉइस आया, एनसीईआरटी की मेन थ्योरी में क्या लिखा है? All the events starting from the pollen grain deposition on the stigma till the entry of the pollen tube inside the ovule. In the main text, NCERT is writing ovule, and in the summary, NCERT is writing embryo sac. So whenever in the exam there is a choice between ovule and embryo sac, we will always go to the main theory जो NCERT लिख रही है, that is the ovule, right? Because we have to prepare for the dire situation कि अगर एग्जाम में दो right choices में से भी better choice select करनी आ गई, so we are going to select the main text of NCERT. We are not going to go for the summary line, right? So this is the ovule. And how the ovule is going to enter, how the pollen tube is going to enter the ovule, that we are going to discuss, but in the next lecture. पता ही नहीं लगा कि टाइम कैसे कट जाता है आप लोगों के साथ, इतना मजा आता है सेशन में. And very very active in the chat box, very good. मसूदा, डॉक्टर प्रियांश, पूनम, शालिनी, बहुत ही मजा आया, पता ही नहीं लगा यार 1 आवर कैसे खत्म हो गया. एंड अब कौन आ रहे हैं? हेलो जी, हेलो मैम, आपने कहा था एक सरप्राइज अनाउंसमेंट करनी है कुछ. सर अभी तो नहीं करनी सर, कितने बजे करनी है सर? आप कितने बजे सर आप जरूर अपने लेक्चर में बता दोगे, मैं पूरा लेक्चर देखूंगी आपका सर. ठीक है, क्या आप बताओ? नहीं मैं रिवील कर दूंगा. सो आज एक सरप्राइज है हमारे पास, शाम को शार्प 5 बजे, राइट? मैं भी होऊंगा, स्वाति मैम भी होंगी और अनूप सर भी होंगे. तो आप सबको 5 बजे हमारे साथ लाइव जुड़ना है. एंड इतना वंडरफुल सेशन चल रहा है, मैं खुद बैठा हुआ स्टूडियो में देख रहा था. तो भाई साथ के साथ उतने लाइक्स भी हमें मिलते रहने चाहिए. एंड आप लोग प्रॉमिस करते हैं कि आप हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर सर्कुलेट करेंगे. विद्या बांटने से बढ़ती है. इतने बेहतरीन तरीके से आप बॉटनी पढ़ रहे हैं, दैट टू फ्रॉम अ दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉपर. इससे बढ़िया आपको और क्या चाहिए, है ना? प्रियांश, पूनम, great. We have Shalini, Divya, Masuda, wonderful जी. Wish you all a very very bright and prosperous future. And मैम स्पेशल क्लासेस अब आप कब से रिज्यूम कर रहे हो फिर से दोबारा प्लस प्लेटफॉर्म पे? आज ले रहे हो? कल ले रहे हैं. गला थक गया भाई. हाँ. और ऑलरेडी कितनी मैराथन्स करी है, कितनी मैराथन्स करी है, लेकिन बच्चों को बहुत लालच आ गई है मैम, एक और मैराथन एक और मैराथन. और जितने भी प्लस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी हमारे वीडियोस अपलोडेड हैं स्पेशल क्लासेस के, आप लोग वो देख सकते हैं. बिल्कुल, मैराथन्स सर का भी है, आई थिंक पीवाईक्यू सीरीज, पीवाईक्यू सीरीज आपका भी सीरीज चल रहा है, तो वो आप सब लोग जरूर देख लीजिएगा. ठीक है जी, चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. ओके बच्चा लोग, तो कितनी देर का ब्रेक मिलने वाला है आपको? 6 मिनट्स. और 6 मिनट में आइज बंद करिए, रिलैक्स करिए, ठीक है? डिवाइस के आगे नहीं बैठना है. और शार्प 3 o'clock सचिन सर के साथ आज क्या पढ़ाने वाले हैं सर? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है सर, आप सरप्राइज रिवील नहीं कर दो, इसीलिए मैं पूरा सेशन सर का बैठ के अभी पढ़ने वाली हूँ. ठीक है, चलिए बच्चा लोग, तो मिलते हैं 3 बजे.